हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिम के अंतर्गत आप सबका स्वागत करते हैं और हम सब मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई श्रील प्रभुपाद एवं समस्त गौड़े भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम इससे पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। प्रारंभ करते हैं। हमने बताया था आपको कि हम जो चर्चा करेंगे वो भगवद गीता से करेंगे, और भगवद गीता जो है वो जीवन के ज्ञान की किताब है, और उसका मतलब जीवन का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, धर्म का धर्म, तो सब कॉमन वर्ड्स हैं आपस में। तो हमने ये चर्चा करी थी और ये बताया था कि ठीक है, ये किताब जो है वो जीवन के ज्ञान की, आध्यात्म के बारे में किताब है, धर्म के बारे में किताब है, परंतु उस जीवन के ज्ञान को क्यों जानना चाहिए ये भी हमने बताया था, क्योंकि ये जीवन का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पिछले हम 100-200 सालों से देख रहे हैं कि शरीर के ज्ञान में तो बहुत वृद्धि हुई है, परंतु जीवन के ज्ञान में वृद्धि क्या मतलब बिल्कुल शून्य सा हो गया है, कम होता गया और ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ जब उसको कम आप इम्पोर्टेंस देते हैं तो क्या होता है, अज्ञानता बढ़ती है ना। तो व्हेन यू गिव लेस इम्पोर्टेंस टू मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, देन व्हाट विल हैपन, यू फॉल इनटू इग्नोरेंस। इग्नोरेंट किसको बोलते हैं? बच्चे को इग्नोरेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा जो है वो लेस इम्पोर्टेंट चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आप समझने लगते हो विच इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये दो चीज़ों को हमने देखा, तो हमने ये आपसे चर्चा करी कल बताते हुए। आज इससे प्रारंभ कर रहे हैं कि हमने कहा था भूमिका से प्रारंभ करेंगे भगवद गीता के। तो भगवद गीता की भूमिका में, वैसे तो भूमिका से ही पहले प्रारंभ करना चाहिए, पृष्ठभूमि से और आमुख से, वो मैं आपको अनुरोध करूँगा, वो अपने आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना जा। चलिए इसको भी कर लेते हैं तो इससे आसानी हो जाएगी। एवरीबॉडी हैज़ इंग्लिश, तो आई कैन गो अहेड इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम्स। सेटिंग द सीन। Although widely published and read by itself, Bhagavad Gita originally appears as an episode in the Mahabharata, the epic Sanskrit history of the ancient world. क्या बताया गया? Bhagavad Gita is actually a very common book. It has been read since ages. It is totally widely published also. There are the book which has got the maximum number of, you can say, translations available, or people who have commented on the book is Bhagavad Gita. Most commented book in the world. So, and it is an episode in the Mahabharata. That means Mahabharata is actually not only the war Mahabharata, but Mahabharata is an epic. It has got 1 lakh shloks. That means how many million? 10 million. है ना? 1 million is equal to 10 lakhs. So it has got 10 million shlokas. Bhagavad Gita has got how many shlokas? Bhagavad Gita 700, yes, 700 shlokas. And the Mahabharata has got 100,000 shlokas. A lakh, तो lakh shlokas है ना, करोड़ नहीं है। 10 million का मतलब करोड़ हो गया, that is wrong. It is 100,000 shlokas. तो उसका 1 लाख हमारे लिए हिंदुस्तान में तो आसान है, 1 लाख, 100,000 बोलने की जरूरत नहीं है, 1 में ही काम हो गया। सो इन दैट भगवद गीता इज एन एपिसोड, राइट। एक सीरियल होता है, सीरियल में क्या होता है? एपिसोड होता है ना। There is a serial and serial has got an episode. Episode is a part of the serial. Episode is a part of a serial. In the same way, we'll read ahead. Mahabharata is actually
history of ancient world. Anything actually for us, anything is ancient which was before us. But this is much more ancient. It is history relating to events which were taken place before 5,000 years also. Before 5,000 years. So this is history Mahabharat. Bharat was actually, the whole world was known as Bharat. The great Bharat. So it was the history of the whole world. And the Mahabharata tells of events leading up to the present age of Kali. So Mahabharata starts from a very बड़ा पुराना शुरू होता है, and it is coming till the age of Kali. The age of Kali started about 5,500 years back. Kali Yug जो कहते हैं, there are 4 yugas. The time has been divided into, it is linear as well as cyclic. Linear का मतलब हुआ ऐसे, उसका मतलब जो एक बार समय निकल गया वो दोबारा नहीं आता. Linear का मतलब क्या हुआ? Linear time means what is gone will not come again, and it is also cyclic. Because day after day night comes, night after night day comes. So it is a cyclic also. Linear भी है, जो दिन निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा, परंतु cyclic भी है कि फिर दोबारा दिन आएगा. So it is something like this. So this time has been divided in our Shastras into very minute atomic time तक divided है. Atomic time जो आज today they are talking of atomic time, which is already mentioned in the Srimad Bhagavatam. That's also one of the books of science of life. It is already mentioned there in the 3rd canto. There are 12 cantos in Srimad Bhagavatam. In the 3rd canto, this has been mentioned. So now, time you can start for us to understand second. Right? 60 seconds make 1 minute, 1 minute makes 60 minutes make 1 hour, 24 hours make 1 day, 365 days make 1 year. Now, we now step from here into the Vedic system. We go into a bigger concept, right? Now in the bigger concept, there are 4 yugas. They are cyclic and linear as well. Cyclic also, that they will come again and again. Year comes again and again or not? Hour comes again and again or not? आज 6 बज रहे हैं तो कल 6 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? परंतु आज वाले नहीं बनेंगे. परंतु बजेंगे. तो उसका मतलब लीनियर भी हो गया और साइक्लिक भी हो गया. तो निकल गया, दोबारा नहीं आएगा. साइक्लिक का मतलब फिर आएगा परंतु सेम नहीं आएगा. तो इसी तरीके से टाइम हैज बीन डिवाइडेड इन अ ब्रॉडर सेंस इनटू 4 युगास, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग. सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग. नाउ स्टार्ट द बैक से शुरू करते हैं, बिकॉज वी आर प्रेजेंट इन कलयुग. कलयुग इज एज इज 4,32,000 years. लाइक 1 day इज ऑफ 24 hours. ठीक है ना? एंड 1 hour इज ऑफ 60 minutes. And 1 minute is of 60 seconds. In the same way, one Kali Yuga is of 4,32,000 years. That is the division of time. Dwapar is double this, 8,64,000. Treta is triple this. And Satyug is 4 times this. And this total one Yuga is known as Kalp. Is known as Kalp. So, such that is 43 lakh 32,000 years. One Chaturyug. Such 1,000 Chaturyugs make 12 hours of Brahma. वो एक चतुर्युग हो गया. वो एक चतुर्युग हो गया. अब मैं आपको लेके जा रहा हूं एज ऑफ दिस यूनिवर्स.
age of this universe. What is the age of this universe? Is equal to the one lifetime of Brahma. Age of this universe is one lifetime of Brahma. Brahma lives for 100 years, but not according to our years. His time frame is different. Like, for example, there are some insects who live for 24 hours. They are born, they grow children, they become young, they become old, and they die. But that is all done in how many hours? 24 hours. Like mosquito and all these, they have very short lifespans. But for them it is 100 years. Is it not? It is full lifetime. अगर मच्छर मारा नहीं जाता तो it has lived a full lifespan. If it dies, if born and dies naturally, that's his full lifespan. And that full lifespan, we basically say is 100 years. So Brahmaji's lifespan is of 100 years, but what is those 100 years constituted of? So Sat Chaturyug, one Chaturyug into 1000 is equals to 12 hours of Brahmaji. And such is the 12 hours of night of Brahmaji. So 2000 Chaturyugs equals to 1 day of Brahma. It is, you cannot calculate, it is बहुत जीरो लगाने पड़ेंगे. ठीक है ना जी? अब कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा. That is 1 day of Brahma. And such 365 days constitute his 1 year. And such 100 years is his life. He is running his 51st year now. समझ गए? हाँ हाँ, क्यों? जो लोग जानते हैं हमें बताते हैं. आप भी जान सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यू कैन गो एंड आस्क ब्रह्मा इज एज. बताऊंगा अभी, ब्रह्मा जी बताऊंगा क्या है. आई एक्सप्लेन टू यू, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ टाइम फ्रेम. सो 5 नाउ इस कलयुग में कितना निकल गया है? 5000, अबाउट 5500 ईयर्स राउंड अबाउट. एग्जैक्ट भी बता सकते हैं. तो उसका मतलब इट इज स्टार्टिंग ऑफ कलयुग. इट्स एब्सोलूट स्टार्टिंग. 4,32,000 ईयर. 5,000 इज जस्ट परसेंटेज भी बहुत कम बनेगी इसकी. क्या बनेगा? 1%, 1.5%. ओनली 1.5% ऑफ कलयुग इज गॉन. नाउ सो दिस महाभारत tells events of leading up to the present age of Kali. It was at the beginning of this age, some 50 centuries ago. 50 centuries कितने हो जाते हैं? 5,000 years ago. 50 centuries ago, that Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to his friend and devotee Arjuna. So this is a dialogue between whom? A conversation between Lord Shri Krishna and his devotee and friend Arjuna. These are the characters of Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, there are 4 people who have spoken. One is Dhritarashtra, number 2 is Sanjay, who is actually telling us this. Number 3, Lord Krishna, and number 4, Arjuna. So these 4 speakers, 4 people are there who have spoken in the Bhagavad Gita. Their discourse, one of the greatest philosophical and religious dialogues known to man, took place just before the onset of a war. A great fratricidal conflict between the 100 sons of Dhritarashtra and on the opposing side their cousins the Pandavas or sons of Pandu. So this was spoken between whom? This was a fight between the sons of 2 people, Pandu and Dhritarashtra. Pandavas were 5 and Dhritarashtra's sons were 100. How many were born? 101. They had 1 sister. So 100. Right? And this was spoken, they were having a fight. And this was spoken just before the fight. And that fight was also known as Mahabharata because all the countries of the world took part in it. World war नहीं कहते आप. When the world gets involved